गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हाउ वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज कल वीडियो में बेसिकली मैं कोई गेम प्ले नहीं करने वाला हूँ, बट यू नो यार, माइनक्राफ्ट का ना न्यू अपडेट आने वाला है 1.2022 एंड जब भी माइनक्राफ्ट का कोई अपडेट आता है ना, तो उसमें बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड होती है एंड ये अपडेट भी बहुत बड़ा अपडेट है। इसमें बहुत ही सारी चीजें ऐड हुई है एंड कुछ चीजें तो ऐसी है जो कि भाई लिटरली माइनक्राफ्ट को पूरा चेंज कर देती है। ये चीजें बेडरॉक के लिए तो ऑफिशियल है, लेकिन जावा के लिए अभी अनाउंस नहीं की गई। लेकिन मैं बता दूं क्या चीज है। तो सबसे पहले तो माइनक्राफ्ट में ऑफिशियल शेडर्स ऐड हुए हैं। आपको तो ये होगा गाइस, हम शेडर्स ऐड करने के लिए माइनक्राफ्ट बेडरॉक में तो टफ पड़ता है, लेकिन जहां में बीएसएन लगा सकते हैं वो भी एक्सटर्नल। लेकिन अब माइनक्राफ्ट बेडरॉक के लिए भाई ऑफिशियल शेडर्स हो गए, जो कि माइनक्राफ्ट को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाएंगे। जावा के लिए भी हो गए, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। एंड एक और नई चीज हुई है जिससे भाई माइनक्राफ्ट में हम विदाउट इलाइट्रा भी उड़ सकते हैं एंड हम सारे फ्रेंड्स साथ में, एक बंदा नहीं भाई 4-5 लोग। भाई बहुत अमेजिंग चीजें ऐड हुई है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हाँ 29 चीजें ऐड हुई है। तो लेट्स गो, देखते हैं वीडियो को एंड वीडियो अच्छा लगे तो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, लेट्स गो। I'm going to be showing you everything that has been added in Minecraft's latest update, and even some features that we will be seeing later on when the full Minecraft 1.22 update actually drops. So first off, if you missed Minecraft Live, ghasts have been turned into blocks, and it's kind of like... Yes! देखो गाइस, आपको इतना होगा माइनक्राफ्ट की मूवी आ रही है एंड माइनक्राफ्ट की मूवी के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है लोग, लेकिन उसमें बहुत ट्रोल भी हुआ था। मैंने ट्रेलर तो दिखाई दिया था आपको, लेकिन गाइस अभी ना माइनक्राफ्ट ने लाइव किया था जिसमें इन्होंने दिखाया। मैंने कहा ना कि एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप विदाउट इलाइट्रा भी उड़ सकते हो। तो यस, गास्ट। अब गास्ट नेदर में होती है ना, लेकिन अब ओवरवर्ल्ड में होगी। सोल सन के पास हमें गास्ट ब्लॉक मिलेगा जिसको हम कुछ ऐड करके ओवरवर्ल्ड में गास्ट बुला सकते हैं, वो भी अपनी पेट। यस, वो हैप्पी गास्ट होगी जिसके ऊपर हम राइड भी कर सकते हैं। यस, लेट्स गो, दिखाता हूँ। Marshmallows. You can't eat them, but you can add water to them in the overworld. And now we have a smiling ghast, and soon the smiling ghast turns into a ghastling, which is alive and flies around. And when you feed the ghastling a billion snowballs, it turns into a happy ghast. Kind of the same concept as human evolution. Next, you can craft a harness using this recipe, and if you right click, ये है गाइस इसकी शेडर एंड सैडल से हम इसको उड़ा सकते हैं। a happy ghast with this harness, it turns the ghast into a blimp, which means you can now ride a ghast. After seeing this, I could not believe it's real. Why does the ghast need these pilots? खुद नहीं लग रहा भाई ये रियल है। एक्चुअली ये देखो कितना कूल है। बेसिकली हम उड़ सकते हैं भाई। Goggles. This design is insane. Anyways, you can have 4 people on a ghast at a time, and you can use the ghast to basically get creative mode building and survival, which is way better than the previous method for this. Okay, yes, ये अच्छी बात है भाई। इलाइट्रा से बहुत दिक्कत होती थी जो ऊपर करना होगा, लेकिन अब तो गास्ट से भाई इजीली हम कुछ भी मिल सकते हैं भाई। 1.22 is also going to feature a player locator bar in multiplayer, and for some reason this bar... सेकंड चीज ये हुई है, बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये इंग्लिश से अगर किसी को समझ में ना आए तो हम क्यों बैठे हैं, इसलिए जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अब सेकंड फीचर ये कि अब ना हम जैसे मल्टीप्लेयर खेलते हैं ना, तो ये ना आपको बताएगा प्लेयर्स दोस्त एक बीचर से बिछड़ जाते हैं, और हमारी 0 एसएमपी में भी ऐसा होता है भाई। तो उनको ना कोऑर्डिनेट्स बार दिखाने पड़ते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमें प्लेयर की लोकेशन पता चल जाएगी कि हमारा दोस्त किधर है, तो हम विदाउट कोऑर्डिनेट्स आराम से उसे ढूंढ सकते हैं भाई। Currently just flat out replaces the XP bar, but yeah, it's basically a compass on your hotbar that can be used to locate other players in your world without their consent. And if you see one of these in your single player world, do not interact with it. Next up, you will not believe it, but Minecraft is finally adding shaders to the game. Yes, shaders आ गए जिसका नाम है Vibrant Visuals. Vibrant Visuals is essentially a shader pack in vanilla Minecraft, which is really cool though, because it's a shader pack in vanilla Minecraft. They finally added shaders to the game. This is Minecraft 2. A couple interesting things are these pixelated shaders से देखो भाई कितना प्यारा हो जाएगा Minecraft, which is different to most shader packs that just have blurred edges on the shadows. And also this water, which I'm not gonna lie, kind of looks like Lego, so I don't know if I'm a fan of that. At the bottom of this, it says captured on a high-end PC, so rest in peace to anybody who's playing on an old laptop, or a tea kettle, or the Las Vegas Sphere. You're probably not going to be able to run this feature. The first feature that... अच्छा, ओके। वेट, लेकिन मैंने सुना है कि ये बेडरॉक के लिए, बट इसमें ये लिखा हुआ है ये पीसी के लिए भी है, लेकिन अगर शेडर्स यूज करने पीसी में तो उसके लिए हाई एंड पीसी होना चाहिए। लो लैपटॉप होगा तो भाई वो गर्म हो जाएगा और फूट भी सकता है। लेकिन भाई
इससे अच्छा हम ऑफिशियल ऐड करें, इससे अच्छा बीएसएल अच्छे। वैसे भी हेडर्स कुछ देने खास नहीं है, बीएसएल लाइक तो है भी नहीं, तो इससे अच्छा हम बीएसएल ही यूज करें ना भाई, वही बढ़िया that है। is actually playable right now in the newest version of Minecraft Okay. is fallen trees. Now you can find trees that have fallen down. Ooh. Apparently this was already a thing in Bedrock. लेट्स गो। अब भाई जावा में हमें टूटे हुए भी पेड़ मिलेंगे, ये बढ़िया चीज है भाई। But this raises the question of how did the trees fall? Because when I break part of this tree, gravity does not exist. So who is making these trees fall? I imagine you've probably noticed that there's human feces all over the ground as well. This is leaf litter. Not only are the trees falling, we got falling leaves now too. These leaves immediately change color upon touching the ground. Unless you're in a pale garden, then the leaves are lore accurate. If you're really out of it like me and you missed this update, the pale garden is like the roofed forest, but it's pale. And there's a dude that spawns in it at night. Guys, you know, हम गए थे इसके पास, भाई Bro, मजा आ I गया don't था। know what he does. Why am I Steve? Who made me Steve? Anyways, what's changed with him in this update is that now if you put a name tag on him, he will survive throughout the day. So you can keep him. ओके गाइस, इस अपडेट में हम इस मॉब को नेम टैग दे सकते हैं ताकि ये डे में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यू नो ये रात में आता है, लेकिन अब ये डे में भी सर्वाइव कर सकते हैं और इससे कुछ ना कुछ फार्म्स भी बनेंगे भाई। अमेजिंग है यार। He will survive throughout the day. So you can keep him now as a pet. As you can see, Okay. there's no such thing as pig racism. The pigs got different variants now. Mojang must have finally Oh. listened to me and added these to the game. We got cold pigs and we got warm pigs. The cold pig is rocking a pig fur coat, as you can see. Pretty tough. Then we got the warm pig with a stripe on his back. Butt naked. Quick intermission. I'm not a conspiracy. ओ भाई, अब पिग्स भी चेंज हो चुके हैं गाइस। पहले यू नो पिंक पिग आते थे, लेकिन अब 3 तरह के पिग हो गए, एक पिंक, एक वार्म और एक कोल्ड। कोल्ड वाला भाई सर्दियों में रहेगा और वार्म वाला गर्मियों में रहेगा। ओह माय गॉड, अमेजिंग भाई। माइनक्राफ्ट क्या क्या theorist, but I swear the lighting looks different. Does anyone else think it looks different? Like, this is different, right? We got cow variants being added as well. It's pretty much the same concept as the pigs. ओह वाओ भाई, काव भी चेंज हो चुके हैं। व्हाट, पहले के काव कैसे थे, अब भाई बहुत मस्त लग रही है, लेकिन अजीब लग रही है थोड़ी। ये भाई इसके सींग आ गए भाई, अब लग रही है ना काव। पहले प्यारी काव लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा खतरनाक लग रही है। एंड इसमें पिग की तरह ये कोल्ड होगी और नॉर्मल होगी। The warm cow is like one of those bulls because it's got horns. Oh, Nah. And this is the cold cow. Same kind of thing, but with a fur coat again. And Why, finally, you amazing, know why? Mojang had to add chicken variants too. I'm not gonna Okay. lie, the cold chicken be looking crazy. This dude got more hair than me. And instead of regular भाई अब माइनक्राफ्ट ने पेट भी बहुत सारे चेंज कर दिए। काऊ कर दिया, पिग कर दिया, चिकन कर दिया, सबको 3-3 में बांट दिया। कोल्ड हो गया, वार्म हो गया, नॉर्मल हो गया। वाओ ब्रो, eggs, cold chickens now lay blue eggs, which I don't think they do shit. anything different. It's भाई एग सिर्फ ब्लू है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस just a इसमें way ये to वाली get cold निकलेगी। chickens in different biomes, I guess. And just like the other mobs, there's a warm chicken as well. It's yellow. Oh. Actually, it's kind of golden. Yeah, No, it अच्छी doesn't लग रही है drop भाई। gold when you kill it. But you can get a brown egg from the golden chicken, and it's a similar concept to सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, लेकिन वो थी नहीं भाई। the blue egg. It's just used to spawn warm chickens instead. Now Mojang is so close to adding ducks. Just add ducks, Oh. please. I have a couple things written down here from a month ago that have to do with sheep. New sheep, they're now upside down. Don't know what that means. I don't think it means anything. Sheep wool color changes based on the biome they are spawned in. So yeah, sheep are now color coded. I don't exactly know how this works, but it's on screen. As you can see, I was confused a month ago too. Sheep in deserts? Who the Fortnite spawn in sheep in deserts? But the most important change here is that the sheep's face now has wool on it. That's not what that's supposed to say. It's supposed to say that the sheep's face is now colored based on the color of the sheep's wool. You can also shear a sheep now, and the little wool spot ओके, पहले मैं भी नहीं समझा, लेकिन अब समझ गया। इसमें ये क्या है कि शीप भी अब बायोम देख के कलर वाली होगी। एंड पहले शीप होती थी ना, उसका फेस पूरा चेंज होता था। लाइक कहते हैं ना कैसे होती, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। नॉर्मल शीप ऐसी थी, लेकिन अब से जो शीप आएगी ना, वो उसके कलर लाइक हो गई। देखो ये ब्लैक शीप है, तो उसकी मूछे वूछे भी सारी ब्लैक हो गई। ब्राउन हो गई, तो उसकी मूछे वूछे भी ब्राउन हो गई। लाइक दिस spots left underneath are colored as well. That's all we have about sheep Yeah, for देखो now. भाई। The sheep man is in the next update. But now अरे I'm भाई। going to share something interesting that I just found out myself. This Just- might not even be a new feature. I don't know. But fish come in different sizes now. If you spawn a bunch of salmon, sometimes you get a big one and sometimes you get a small huh. one. But if you kill them, you get the exact same amount of salmon no matter what size it Yes. is. This also works on cod. No, it doesn't. भाई अब शीप का भी साइज चेंज हो चुका है भाई।
This also works on squids. There's baby squids now, which is ओह स्क्विड में बेबी स्क्विड आता है, ये पहले आता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन लेट्स सी भाई। awesome because I mean it's अगर आता था तो गाइस कमेंट में बताना, अगर नहीं आता तो भाई नया अपडेट है। pretty cool. Not much to say about that. Did that squid just turn into a baby when I punched it? I don't even know, man. There isn't really much to say about a lot of these updates, like the lodestone now being made with an iron ingot instead of netherite, and it can be found in ruined ओह ये अच्छा हुआ भाई, लोड स्टोन भाई पहले नेदरराइट से बनता था लेकिन अब आयरन इंगट से बनता है, ये अच्छा हुआ बिकॉज भाई अगर हमारा नेदर पोर्टल घूम जाता है ना भाई बहुत दिक्कत होती है, तो अब इससे कंपास मिलेगा जिससे हमें फायदा होगा। एंड अब ये भाई वो रूइंग पोर्टल में भी नहीं लगा भाई, ये बढ़िया है। portals. It was already found in bridge bastions though, so like who was even crafting it anyways? And I just said something about one of the updates, so I guess I was wrong. Beacon beams are wider now when you are far away. You can find bundles in villages. I didn't even know the bundle got added to the game. It was like a mythical feature that I thought would never be obtainable in survival. And camels भाई बंडल अच्छी चीज है भाई, इन्वेंटरी शॉर्ट आउट करते now spawn naturally in the desert. All those things are random and have nothing to do with each other. But other than camels, the desert actually has gotten quite a few updates. To start off, we can get flowers from a cactus. भाई कैमल्स अब वो पहले पता ही होगा विलेज में होते हैं, लेकिन अब डेजर्ट में रैंडमली भी स्पॉन होते हैं भाई। ये बढ़िया है। Now, it's called the cactus flower, and it can be used to make pink dye, or it can just ओ अब पिंक डाई के लिए भाई कैक्टस फ्लावर भी ऐड हो चुका है। वाह भाई माइनक्राफ्ट क्या क्या कर रहे हो भाई तुम। be used as a decoration, like the new dry grass that is found all over the desert as well. डेजर्ट की भी ग्रास आ गई भाई, ड्राई ग्रास, वाह। Similar to leaf litter, I think लीफ भी आ गई भाई। this is just an ambient block. I don't think anything can be done with it. It's kind of like the dead bush, except this one doesn't drop sticks. It does come in different sizes though. I also have written ये down स्टिक नहीं देती, वो वाली स्टिक देती है भाई। that there are scary sounds in the desert now. I think it's just this sound, इनका प्लस सैंड इनको है। which I can't even hear, so it's not really scary. There's new wolf sounds now as well. Wolves now have one of 7 random personalities. It's like pandas, except it's wolves. Your wolf can now be angry, big. That's big AF. Your wolf can be cute. Your wolf can be ओ भाई वुल्फ की आवाज भी चेंज हो चुकी है, एंग्री होगा, वो क्यूट होगा भाई, ग्रूमी होगा। grumpy. Your wolf can be puglin. And finally, your wolf can be sad. There's also भाई, ये still the amazing regular है। old sounds as well. Big news for cows. भाई, Now they ये have an बढ़िया। extruded nose instead of a flat nose. Same thing for mushrooms. Super big news. And you're Okay. also able काऊ में भी अब नॉर्मल काऊ थी ना, उसमें भी उनकी नाक जो है ना वो आगे से बढ़ा दी है, पहले ना चिपकी हुई थी लेकिन अब चिपकी to हुई नहीं है। spawn them from these brand new cow-themed spawn eggs. Along with those eggs, every single spawn egg has been changed to match the mobs that they spawn. Some of my favorites here is the tadpole. That is not a tadpole. The villager kind of looks like Easter भाई ये बढ़िया चीज की भाई, एग्स पहले के नॉर्मल से आते थे लेकिन अब सारे एग्स सारे मॉब्स के चेंज, भाई कितने कूल लग रही है। विलेजर का देखो भाई, island and the hoglin. I mean, this Hoglin isn't का even देखो, an egg warden का anymore. देखो It's भाई। just a hoglin. There's also some new test blocks that are Amazing added भाई। in this update. We got the happy and sad test blocks. These look like a lot of people's skins. We got this one. It's got like a crosshair Oh। on it. This one, which भाई, has some kind of blocks भी structure बढ़िया है test भाई। inside of it. And this chat bubble one that does the same thing as all the other ones, except for the structure one. And what they do is, I really like that they can, it's super cool that they, another new block is the wildflowers, which are like the pink petals from 1.21. Except instead of being found in cherry biomes, these can be found on the ground in birch forests. They work exactly the same as pink petals. You can place 4 of them in one block like this. And you can also find firefly bushes now, which is a type of bush that houses firefly. ओके गाइस, अब ना पहले पता ही होगा 1.20.1 में वो चेरी ब्लॉसम वाला आया था तो उसमें गिरते थे पत्ते, लेकिन अब यहाँ नॉर्मल वायम में गिर, लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मल वायम में भी होगा, लेकिन वो गिरेगे नहीं, बेसिकली वो नीचे से ही हो गए, तो वैसे ही आएगी। और ये कोई फ्लावर फायर वाला कोई inside आया of it, which are not currently a mob in the game. Firefly. They're just pixels that are found hovering around these bushes. Okay, Supposedly, इसके आसपास भाई वो चेरी ब्लॉसम वाला होता था ना, वैसे ही भाई उजाला कर देता भाई आसपास। you can also hear a buzzing sound when you go near a firefly bush. I am not hearing a buzzing sound though, so I don't know about this. If that wasn't enough ambience though, we also have an alternative to tall grass now, or short grass, as it's ओके अब टॉल ग्लास भी आ गई है। तो गाइस इतने सारे अपडेट्स आने वाले हैं भाई 1.22 में, भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, कब आएगा मेरे पास, बस अभी मेरे पास तो आया नहीं ऑफिशियली, तो लेट्स सी भाई कब आएगा। तो चलो गाइस यार आज कल वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी इसको लाइक कर दो, चैनल में नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। या